Okay. I assume that I assume I'm audible now. Okay. Now, 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 am I audible, everyone? Yes. Okay. Perfect. Perfect. Very, very good evening to all of you once again. I'm so sorry. Technical hitches here and there. Kritika, Aditi, Rajan, Ria, Mudit, Sindhuja, Navya, Asika, Aishanya, Nimisha. Okay, lot of people on the chat box. Always good to see. Very good evening to all of you. I'm sure all of you had a lovely day, and I hope all of you are preparing as seriously as possible towards your CLAT examination. चलो अभी immediately last 50 days तो नहीं है, 50 days से थोड़ा ज़्यादा time है, and I think I'm meeting a lot of you for the first time, so let me take a few moments to introduce myself as well. Um, my name is Devajyoti Das, as you might have seen earlier, and I'm basically from Odisha, and I've been associated with Clat Possible. Although on YouTube, I'm taking the sessions since very very recently. Is my first session right now. I've graduated from law school. As one of the things you can see is I also secured an All India rank 20 in the NLS Bangalore entrance many many years ago. This is in 2006. तो उस टाइम पे तो क्लैट का एग्जाम ही नहीं होता था. It's the law schools conducted their examinations separately, right? Risita, Bhave, Mehak, Aishwarya, okay, Bornali, Sanskriti, very good evening to all of you. People are still joining in. ओके 59 डेज सही है 59 डेज बिल्कुल. सो 59 डेज को लास्ट 50 डेज के हिसाब से भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोग को भी प्लान करना चाहिए. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड रियली बी केयरफुल अबाउट? व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट people commit? आई एम वेरी गुड, आई एम डूइंग वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. कुछ कुछ लोग पूछ भी रहे हैं सर जी, मैं तो 4 देने वाला हूँ 60 दिन में. क्या बात है, यही यही मोटिवेशन और यही एटीट्यूड. बट आई सी 97 people watching and only 34 people have dropped a like. थोड़ा लाइक का बटन भी हिट कर ही देते नहीं? थोड़ा हम लोग को भी जीवन में मोटिवेशन ज्यादा बना रहता है कि चलो आगे कुछ और बताएं, कुछ इंटरेस्टिंग बताया, ज्यादा तैयारी करके आए, and so on, by hook or by crook. Okay, I don't think you'll need to go towards the crook method. बस पढ़ाई वढ़ाई करके हम लोग को आगे बढ़ना है, right? Okay, 20-30 people have dropped likes as well. Very nice of you, very kind of you guys. Okay, let's not waste too much time. जीवन में आगे बढ़ा जाए. I am also constantly looking at the chat box, guys. Don't worry too much. अगर कुछ questions हो, please do let me know. Hey sir, boards भी हैं, so it's getting a little difficult to manage. I understand, Navya, and I'm sure a lot of others also. You probably have to balance and juggle, a few things, including your board examinations. But please understand that ultimately it's a very competitive examination, है ना? काफी competitive examination है, and there are people जिनका ये बोर्ड एग्जाम और ये वाला कॉम्प्लेक्सिटी अपने लाइफ में नहीं है, या वो पिछले साल बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, right? So whether it's fair or unfair, कहीं ना कहीं ये होगा तो जरूर कि उनको थोड़ा शायद एडवांटेज हो. But it's okay, you just have to sleep a little lesser maybe. You have to probably spend lesser time on your phones, except for academic reasons and so on. So बस seriousness के साथ आगे बढ़ना है, और ज्यादा बहुत बहुत difficult या बहुत complex चीज नहीं है. Now one of the questions, and one of the things that people usually start ignoring in terms of the last few days is वो न्यूज़पेपर छोड़ देते हैं, because you keep getting the feeling that the question paper is already made, the question paper is already created, right? तो अब तो न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स आएगा वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए हम न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देंगे. बट आई वांट टू इंसिस्ट, if there is nothing else you are doing on the day of your CLAT exam also, उस दिन सुबह भी
आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के फिर एग्जाम देने चले जाना. I agree with you, and anybody who has that, who has that sentiment, कि मोस्ट लाइकली अब आज के न्यूज़पेपर से तो कैसे ही होगा, क्वेश्चन पेपर प्रिंट भी हो चुका है, सेंटर्स पे भी पहुंच चुका है, so we are not going to have any questions from today's newspaper. But the ability to improve your reading speed, the challenges in the CLAT examination is not as much about the difficulty of question paper. I think बहुत लोगों को अगर 2 घंटे की जगह 4 घंटे टाइम दे दिया जाए या 5 घंटे टाइम दे दिया जाए, the average score in the examination itself is going to, skyrocket. The cutoff is probably, going to increase by 10, 15, 20 marks even. But actually 5 घंटे है नहीं, सिर्फ 120 मिनट at the end of the day, right? 120 minutes and 150 questions. That's the number. 120 minutes and 150 questions, right? Sorry. And 150 questions, which means you have less than 55 seconds odd per question. So your reading speed अगर आपका 2% भी improve हो रहा है, 1% भी improve हो रहा है, you have to continue doing it, right? Okay, Indian Express or Hindu? Okay, Rajan has a question. Considering most of the passengers in recent CLAT are from Indian Express, but the popular choice seems to be Hindu. No, personally, अगर मेरा opinion है, I strongly recommend which newspaper to read. ये जो question दिख ही रहा है, my suggestion is forever Indian Express. मेरा तो suggestion Indian Express है. Now, of course, if you are reading the Hindu, उसमें कोई खराब बात नहीं है. Hindu is also a very good newspaper. I have no complaints, and it'll continue to help you in your academic pursuits, not just for the CLAT exam, but even CLAT के बाद आप कभी UPSC देने जाओ, कुछ और करने जाओ, तो भी Hindu will continue to be relevant, will continue to be helpful. But personally, I like the Indian Express just a little more. And as Rajan is pointing out, ये बात भी completely सच है कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आजकल डायरेक्ट पैसेजेस या कुछ आर्टिकल्स जो ओपिनियन एडिटोरियल ये सब कुछ आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स में नाउ इट इज आल्सो फोकसिंग ऑन इंडियन एक्सप्रेस. क्लैट एग्जाम में डायरेक्टली इंडियन एक्सप्रेस के पैसेजेस भी पूछे गए हैं इन क्लैट 2020, 21 एंड सो ऑन, राइट? सो आई डेफिनेटली रेकमेंड द हिंदू. ये लायन हॉगवार्ट्स, इंटरेस्टिंग नेम. Sir, small doubt. Can status quo and stay order be applied together at one time? I mean, status quo maintain ही अगर करना है, right? If the status quo is anyway going to be maintained, then that by default that means that stay order separately will not be granted. No, usually या तो already कोई चीज का stay पहले से दिया हुआ है. So now if we are continuing with the stay order, then we are maintaining status quo and continuing with the stay order. So then it does, that theoretically is absolutely possible, right? So मैं science stream से हूँ and मेरा legal knowledge क्या करूँ? Well, सबसे पहले constitution से शुरू करो. That's what I would recommend. There are and newspapers, because it's two kinds of legal that you have to be careful about. One जो सबसे important है, it is definitely constitution. Now if the moment we are looking at legal, first is definitely constitution, but two is definitely current legal news. Okay, so कहीं important judgment आ रहा है, कहीं कुछ like अभी कुछ states में we had the Vidhan Sabha elections that happened from Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand and so on. So now, what are the various electoral laws of India? Right to vote legal right है या constitutional right है या fundamental right है, right? These are very popular questions. So CLAT में भी कई बार they've asked that question many times as well, right? From so of course right to vote is not a constitutional right. Right to vote is not a legal right. Right to vote is
is not a fundamental right, it is a legal right, it's a statutory right. क्योंकि वो कहाँ से आता है, वो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में है ही नहीं, वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, राइट. Who is representing, who is eligible to contest, who are disqualified from contesting. Again, these are, basics about electoral laws, for example, right. In the last few weeks, etc., we've also seen the Karnataka hijab controversy that happened. If you're looking at Russia and Ukraine, तो एक तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, but other than that there's a lot of legal developments that are happening in terms of the assault at Mariupol or the assault at the Crimean territory या कहीं पर भी हो, because Russia, for example, is a permanent member, okay, permanent member of the Security Council, so Russia has a right to veto. अब अगर रशिया ने अपना वीटो का राइट यूज किया, then is there a way to overrule a permanent member's veto? क्या जनरल असेंबली में ये चीज की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, whatever it is, this is something that, so we have the Uniting for Peace resolution general assembly में जो पास हुआ था. I'll try to cover some of these topics in the coming days and weeks ahead, don't worry too much. YouTube पे भी करेंगे और हमारे जो क्लासेस हो रहे हैं उसमें तो डेफिनेटली हम कवर कर ही रहे हैं, बट इवन आई विल ट्राई टू कवर सम ऑफ दीज टॉपिक्स, that which resolution can be used, what are these things, what are some of the other international law issues, and so on, right. Shashwat, what about TOI? Well, I mean, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है टाइम्स ऑफ इंडिया में. क्लैट के लिए कोई भी एक न्यूज़पेपर चलेगा, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू फॉलो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इट्स रियली अप टू यू whichever newspaper you want to follow. बट हाँ, किसी में डिस्ट्रैक्शन थोड़े कम है, किसी में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, राइट. यस सर, इवन इन आवर मॉक्स, द राइट टू वोट क्वेश्चन, राइट. कोई बलिया यूपी का है क्या? क्या बात है. मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, बट आई एम श्योर देयर इज धनंजय सिंह, सॉरी दयाशंकर सिंह, अभी तो वहां से बलिया से इलेक्शन हुई थी ना. सृष्टि हैज अ क्वेश्चन, सर, व्हाट इफ समवन हैज not read newspaper from months and preparing for GK from Delhi GK videos of CPN monthly magazine? So from a purely GK perspective, from a purely purely GK perspective में तो चलो चल जाएगा, that is not a problem, except the problem is that then your reading speed will, it would not have improved as much as it needs to improve, राइट. तो न्यूज़पेपर मैं इसीलिए बता ही रहा हूँ कि मेरा प्राइमरी पर्पस तो न्यूज़पेपर कहने का ये है ही नहीं दैट यू शुड लुक एट इट फ्रॉम अ जीके पर्सपेक्टिव और लीगल पर्सपेक्टिव, वो तो है ही, राइट, वो तो है ही, बट अदर देन दैट देयर इज आल्सो द रीडिंग स्पीड एटसेट्रा व्हिच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन प्रोसेस. तो वो भी डेफिनेटली हमें ध्यान में रख के ही आगे तैयारी करनी चाहिए. दैट्स द आइडिया. ओके. What about MHCT? Good or bad? MHCT is a very, very important examination. I think if anybody has not filled up the forms, etc., please do, because at least 2 colleges Maharashtra CET में हैं जिनका at least top 10 नहीं तो top 12 NLUs से तो better ही में वो आएगा. For example, one is GLC which is in Mumbai and the other is ILS Pune. So at least ये 2 colleges तो महाराष्ट्र CET में very, very good colleges की category में ही आएंगे, right. So many former chief justices and lot of things. अब न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यू तो करना ही है, राइट. छाया, न्यूज़पेपर शुड बी रेड डिजिटली और फिजिकली, बट आई मीन इट्स अप टू यू. न्यूज़पेपर पढ़ने से मेन बात है, बट फॉर समबडी ऑफ माय एज, बिकॉज मैं तो ऑब्वियसली क्लास 8 वगैरह से न्यूज़पेपर जब पढ़ना शुरू किया था, देन इट वाज नॉट टू मच ऑफ एन ऑनलाइन इशू, राइट. So I of course have read the newspaper physically always, so I'm used to reading it physically. तो मुझे अब पूरा न्यूज़पेपर फोन पे पढ़ना बहुत वियर्ड लगता है, तो मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, but it's up to you. If you are actually comfortable, then that's fine. सर, एडिटोरियल में कितना टाइम लगना चाहिए? 15 minutes for the whole editorial page. 15, maximum 20 minutes मान लो. So before CLAT, when is the possibility of the paper to get prepared? And also, yes, that's a very important question. देवयानी, that's a very important question. कब बनता है क्वेश्चन पेपर, उस हिसाब से थोड़ा हमें ध्यान रखना आसान हो जाएगा कि कब से हम जीके इग्नोर कर सकते हैं कम से कम, राइट.
The question paper, I believe, will be made maximum in the next 15-20 days. Next 15 to 20 days maximum. By the first week of May, I'm pretty sure the question paper would have been done and finalized and so on, right? So if our reading speed and comprehension is not going to be reading newspaper from times, so which one is better, practicing RC questions and passages or newspaper? All of them have to be done together. Tanvi, Thakur, Tanvi, all of them have to be done together. It cannot be either or. So if you are reading passages or practicing RCs, that does not mean you can ignore newspapers. Similarly, if you are reading newspapers, that does not mean that you can ignore practice, right? वो सारी चीजें साथ में ही करना पड़ेगा. ये one or the other type का नहीं हो सकता. Okay. So for government colleges, what are other exams except for CLAT and AILET? Maharashtra CET. Nimisha, CLAT तो है ही, AILET भी है. Those are for the national law universities and AILET is one national law university के लिए AILET है. But other than that, GLS ILC, GLC ILS के लिए GLS ILC का GLC and ILS के लिए it is the Maharashtra CET which is very important. Any specific? So the practice has to be a little different, right? Practice has to be a little different. कितने नंबर लाने होंगे कोई भी एनएलयू मिल जाए के लिए? आई थिंक एनीथिंग अबव 90 में लोअर एनएलयूज तो मिल ही जाएगा पक्का. लेट 80s में भी लोअर एनएलयूज मिल जाने चाहिए. बट मतलब जब सपना देख ही रहे हैं तो लोअर एनएलयूज का देखेंगे क्यों? सपना तो कम से कम ऊपर का होना चाहिए ना. Why lady should we focus on speed or interpretation? Both. Rishabh, both. What about DI? Well, again, DI ka I don't recommend too many like practice books वगैरह तो कितना पता नहीं. So the materials that we are providing you, the mocks that we're providing you, other practice sheets that we are doing, all of that put together should help you with enough number of questions, and your DI can be taken care to that extent. What about December 22 aspirant? From which month should we begin our GK? You should already be reading Hasika. Aishanya, sir, can you please answer my question? Aishanya, can you please post the question one more time? कहीं छूट गया होगा तो. Oh, okay. I can see your question. Sorry. Sir, I had completely set GK aside all year long and just started just recently. How should I go about my preparation? You need to start getting at it as quickly as possible. As quickly as possible. मतलब at least हमारा GK material वगैरह से तो शुरू करो ही. There's so many videos, etc. A lot of them are already there. So you have to go ahead and मतलब जितनी जल्दी से late नहीं करना है. Sir, CR passages are difficult than RC passages. Any tips to improve? Well, to be honest, it's a very simple answer. But simple answer है लेकिन बहुत सच की बात बता रहा हूँ. Logical reasoning का पूरा section ही and DI का या quantitative aptitude का पूरा section, ये दोनों section is not it's very little about preparation, but rather most of it is simply about practicing. पूरा एजेंडा ही वही होता है, राइट? ये दोनों सेक्शन में जीके में क्या है कि तैयारी भी करेंगे, जीके का प्रैक्टिस तो क्या ही करना है. प्रैक्टिस इज नॉट एज मच ऑफ अ नीड एज फार एज जीके इज कंसर्न, फॉर एग्जांपल, राइट? बट सीआर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो सेक्शंस है, इसमें तो एक ही एजेंडा है, एंड दैट एजेंडा इज डेफिनेटली प्रैक्टिस. Right, yeah, Aditi, 100 plus, at least 110 maybe, to be completely safe side, right? Okay. Overall time management, ये important question तो है. मुझे लगा आप लोग already time management type के planning वगैरह सब कुछ कर चुके होंगे. But basically the breakup that I always recommend, okay, the breakup that I always recommend is, we have two types of questions in the CLAT exam. There are reasoning questions, okay, and there are information based questions, okay. कुछ में रीजन वगैरह चाहिए, कुछ में सिर्फ रीजनिंग होता है. जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है, इट्स 1 minute per question मान के चलो, राइट? एंड जो प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, these are let's say 15 to 20 seconds per question. ये per question है, ये 1 minute per question है, right? Because overall देखोगे तो फॉर एग्जांपल जीके सेक्शन में आपको कितना टाइम लगना चाहिए ना.
IP you take on how's Andhra Pradesh University? It's okay. I mean, it's not bad, but definitely not one of the NLUs type का तो नहीं होगा ना वो. सर प्लीज ऐसा कर दीजिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 नंबर का आ जाए. अरे क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम का. हाँ, आई अंडरस्टैंड. I understand. Sir, will it be helpful to just view the previous year's paper once? Also, many previous year. Yeah, you should take a look at the previous year papers as well. You should take a look at the previous year papers as well, and not just 2 years. Not just 2 years. It has to be more than that. Has to be more than that in the sense that I mean, what I'm trying to get you to understand is pattern change हुआ है. Okay, pattern change हुआ है, but the areas from which they ask questions वो change नहीं हुआ है, right? So the weightage on constitutional law, for example, or the weightage of current affairs, किस न्यूज से किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है, वो सब तो आपको तब भी पुराने पेपर्स में भी दिख ही जाएगा ना. सो व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स फॉर एग्जांपल, तो क्या याद रखना चाहिए, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, all of these, it just becomes a little more helpful if you look at past year papers, right? So not just CLAT 2020 or 2021, but even before that, right? Even before that. Yeah, IPU has placements. Yeah, why not? I mean, it doesn't have excellent placements, but it does have placements. Right. Okay. सर आपका कोई 60 डे का कोर्स है क्या बूस्टर के लिए? 60 डेज में क्रैश कोर्स तो है ही, 60 डेज की बात नहीं है. इट इज टिल द क्लैट एग्जामिनेशन ही चलेगा. टिल द क्लैट एग्जामिनेशन ही चलेगा, राइट? सो नो वरीज देयर, राइट? And I'm sure the link is available. You can directly go to our website, and you can look for the various options, etc. on the website, right? For the courses, if you look at the description of this video, इसी वीडियो के description में we already have posted the link for all the courses, right? तो उसी हिसाब से you can probably proceed, right? कुछ discussions हम लोग YouTube पे भी करते रहेंगे. Okay, ideal mock score in CP mocks is in and around 100. अगर 100 plus है तो very good. अगर 100 के आसपास है तो it's acceptable. अगर 90 के below है तो फिर थोड़ा पढ़ाई बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, and so on, right? Sir, which sections to attempt first? No. Don't think about those things. See, अगर examination offline की जगह online होता, if the examination was online, then you could have probably chosen कि किस section से मैं start करूं, because you can click also, right? English के click किया या GK का click किया. But जब paper offline है, then the first complication you have to understand is कि आपको question number 1 ही से शुरू करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1 ही से करना चाहिए, क्योंकि वरना आप पेपर भी फ्लिप करते रहोगे, सेक्शन ढूंढोगे भी, उसके बाद ओएमआर में सिमिलरली मान लो क्वेश्चन नंबर 71 से मेरा पहला अटेम्प्ट है, उसमें गलत शेडिंग होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे. इट्स नॉट वर्थ द रिस्क. It's simply not worth the risk, even if you have probably made a plan कि मैं A section से शुरू करूंगा या B section से. I recommend that in the last 50 days जो आपके सामने आ रहे हैं, right? Mocks and getting used to offline papers, getting used to the whole idea of OMRs, right? मैं इसी वजह से specifically आप लोग को बता रहा हूं, because of the offline paper, don't start with any particular section. You must start with question number 1. Start from question 1. बात खत्म. कॉम्प्लिकेशन पे जाओगे, एक तो पक्का 1-1.5 मिनट 2 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा ना. राइट सर, व्हाट आर यू टेलिंग अबाउट द सेक्शंस एंड टाइम ब्रेकअप? आरव, वही मैंने बताया that there are 2 types of questions, right? रीजनिंग क्वेश्चंस एंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस. सो जो रीजनिंग क्वेश्चंस है उसमें आपका 1 मिनट पर क्वेश्चन का एवरेज टाइम होना चाहिए, एंड जो प्योरली इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस हैं लाइक जीके, that should take you approximately 3 questions per minute, so 20 seconds, 20 seconds per question type का.
राइट सर मॉक स्कोर को इंक्रीज कैसे करें, वही सब तो डिस्कस कर रहे हैं. How should we analyze mocks? I take a very long time in that. Minimum score for NLUs 90, 90, right? We have physical sheets. So question paper लेने के बाद आप भाई OMR तो कहीं से भी प्रिंट आउट वगैरह भी ले सकते हो ना. So get used to that. Please get used to the whole OMR system, right? Please get used to the whole OMR system. Otherwise, पहली बार OMR अगर एग्जाम में करोगे, see if you are attempting let's say 100, 110, 20 questions जितने भी हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको कितना टाइम लगता है? मैं कह रहा हूं कि 2 to 3 seconds शेडिंग के लिए लग जाएगा, राइट? शेडिंग ऑन द ओएमआर के लिए. ओके, सो इफ यू अटेम्प्ट 100, 110, 20 क्वेश्चंस, राइट? 120 क्वेश्चंस 3 सेकंड के हिसाब से हो गया तो भाई पूरा 300 सेकंड निकल गया ना. दैट्स अ फुल 5 मिनट्स. दैट्स अ फुल 5 मिनट्स, राइट? सो जितना ज्यादा आप यूज टू होंगे, कम से कम 3 की जगह 2 पे तो पहुंचेगा एवरेज टाइम टू शेड एंड ऑल दैट. सो विच वुड मीन कि चलो 3 मिनट का, तो 2 मिनट इज ऑल्सो वेरी प्राइसलेस. प्लीज अंडरस्टैंड. आखिरी 50 दिन में हमें ये सब समझ जाना चाहिए दैट every mark is important, every single thing is very important, so therefore we should continue to look at it from that serious perspective as well. राइट वेदांत पहले पहले दैट्स राइट. सर अगर स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो गए तो shouldn't we start with the section we are more confident in? I mean you cannot have a weak section, no. भाई कोई सेक्शन आपका स्ट्रॉन्गर हो सकता है, आई अंडरस्टैंड, बट कोई वीक सेक्शन तो होना नहीं चाहिए ना. हर सेक्शन में आपको अबव एवरेज तो स्कोर करना ही है. सो डिमोटिवेट क्यों हो जाओगे? ऐसा कौन सा सेक्शन आपको डिमोटिवेट कर देगा? उसी सेक्शन को आज पहले जिंदगी में एक चुनौती बना लो ना. ये ऐसा कोई सेक्शन अगर मुझे लग ही रहा है तो वो सेक्शन को पहले मैं अभी जाके अटैक करना शुरू करें, राइट? दैट शुड बी द. and given the answers, no am I seriously, but oh wonderful, wonderful. सही है, सही है. 50 days में पॉसिबल है क्लैट करना? मुश्किल है, मुश्किल है. I will not try to make it deceptive for anybody, of course, because there are people preparing for months, right? People are already preparing for months, so it's difficult, but I would not say that it is impossible. Of course everything is doable. आप बस मेहनत, फोकस, प्रैक्टिस, ये जो some essentials हैं, वो essentials को करो तो क्यों नहीं हो सकता? All things are possible. No. कोई कोर्स है अंडर 1000 जिसमें आप पर्सनल मेंटर करो? 1000 रुपए में तो मुझे लगता नहीं कोई कोर्स होगा, बट आई कैन चेक. We keep here at Clat Possible, we keep conducting various scholarship tests though, and we do offer up to 100% scholarship for the top scorers and so on. So top 5 I think, जो भी हमारा NTSC होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, अभी लखनऊ में 24th को, those of you who are present or are in and around लखनऊ भी अगर आप लोग हैं तो 24 तारीख को 24th we have the NTSC examination which is happening offline. So please do feel free to come in, and if you do very well, under 1000 क्यों, पूरा फ्री में भी हो जाएगा, 500 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे. No. Yes, but my question is from which month should we focus? I mean from 21. Or from which month? No, so just previous CLAT exam के बाद से, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, essentially जो previous CLAT होता है उस CLAT exam के डेट के बाद से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है. That's the plan. Always that is the plan. How many questions should we attempt out of 150? Ideal, the ideal number of attempts is around 130. Approximately. चलो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है. That's fine, but approximately 130 should be 130 attempts के आसपास होना चाहिए. Like in and around, इसी रेंज में, मतलब ठीक है ना, इसी रेंज में आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होना चाहिए. इसमें से 10-15 और गलत भी तो होंगे, है ना? तो रॉन्ग आंसर्स को डिक्रीज कैसे करें? मतलब ये तो ओवरऑल प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करेगा ना अर्चना.
if you've prepared well, then you won't be guessing. वो guessing की वजह से wrong answers होता है ना. But if you're sure about a particular answer or a particular condition and so on, you will not नहीं होगा. तो प्लीज बस एक दिन मेंटर कर दो. पिछले साल कोई मेंटर नहीं था इसलिए थोड़े से के लिए छूट गया. तो बिल्कुल बलवान फ्रॉम बलिया, please do feel free to reach out, and I'm sure something or the other can be figured out and I will be able to help you out, no problem. Okay, so uh, so just some of the important things जो मैं basically बताना चाहता था before we say bye to each other and all that. Please don't stop reading newspapers. Number one. Number two, please now start shifting your focus from जो एक कोर्स वर्क के लिए पढ़ रहे हैं या तैयारी बुक पढ़ रहे हैं, उससे शिफ्ट करके अब नाउ द प्रायोरिटी हैज टू बी मोर प्रैक्टिस एंड लेस स्टडीइंग, राइट. सो अगर आप पहले हर 2 हफ्ते में एक मॉक देते थे, नाउ आई वुड रेकमेंड कि हर 2 से 3 दिन में, राइट, एक ना एक पास्ट ईयर पेपर खुद सॉल्व करना चाहिए, एक ना एक मॉक आपको देना चाहिए. Here at Clat Possible, every single week, anyway, we will be doing one mock for you, right? तो अगर आप कुछ और भी, अगर हमारे कोर्सेज भी आप नहीं ले रहे हैं, that's fine, but at least टेस्ट सीरीज लेके हर हफ्ते मॉक तो डेफिनेटली दे देना चाहिए. अगर दोपहर में सोने की किसी को आदत है, please change that habit as quickly as possible. This is the last lap. Last 59-60 days जो बचे हैं, 50 days जो बचे हैं, that is what you need to remember. It's things like this that can be the difference between 1 mark or 2 mark or 3 mark. कुछ तो difference आएगा, वही 1 2 3 marks enough valuable होता है. Please try to ensure that you don't have any sleeping habits in the afternoon, क्योंकि आपका ब्रेन बायोलॉजिकली वगैरह सब यूज्ड टू हो जाता है कि भाई ये तो सोने का टाइम है, रिलैक्स करने का टाइम है. बट क्लैट में जब दोपहर को आप एग्जाम देने जाओगे, you need your brain to function with 100% capacity, 110% capacity and so on, right? Sarala says I have that problem. No, please change it very quickly. ठीक है, पूरा जितनी जल्दी इसको चेंज करो. दोपहर में सोना ही नहीं है. दोपहर में कोई बोरिंग चीज भी मत करना. बोरिंग इन द सेंस लाइक डोंट वॉच बिग बॉस इन द आफ्टरनून. You need to do something which is intellectually stimulating, right? ब्रेन का स्पीड इंक्रीज होते रहना चाहिए. ठीक है. तो बिग बॉस भी मत देखो, सो भी मत, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करो. ओके, या सो जस्ट 2-3 थिंग्स ये जो आप सबको याद रखना चाहिए. एंड प्लीज कंटिन्यू फोकसिंग. प्लीज डू रीच आउट टू अस if you have any doubts, any confusions in the future. Please do drop in a comment, etc. If you want any particular session that all of us here at Clat Possible should be conducting, whether it is specifically about how to attempt offlines or any particular section or any particular current affairs topic, anything that you want me to discuss or want some other faculty member who is probably taking up quantitative aptitude or even general knowledge, etc. All of us here at Clat Possible are also dedicated and trying to figure out what best can be done towards the pursuit of academic excellence. So therefore इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग हमसे जुड़े जरूर रहिए. Definitely do continue to reach out to us so that so that we can also be more helpful to you if we get your own feedbacks and so on, right? हमारे सर कहते हैं कि मॉक देने से मार्क्स इंक्रीज नहीं होते, तो ये सही है क्या? क्यों भाई, मॉक देने से बिल्कुल इंक्रीज होते हैं. ऐसा क्यों होगा अर्चना? मॉक्स देने से मार्क्स इंक्रीज होते हैं. मैं नहीं मानता उस बात को कि नहीं होते हैं. So any plan for GK in the last 50 days? Yeah, last 50 days में बस न्यूज़पेपर पढ़ना बंद मत करना. वही, that's the first and the most important thing I wanted to say to all of you. Okay. ओके, सही है. फिर जो जिसमें तैयारी चल रही है. I'm doing current affairs GK from Jan to June. Is it adequate? Please clarify. Completely. You don't need from Jan actually. मई के बाद से, मई 2021 के बाद से, बेसिकली 2021 में जब क्लैट हुआ है उसके बाद से आपको करना है, राइट? ओके.
In any case, I will be coming back with a few more. मैं आपके जो बहुत सारे कमेंट देख के मुझे समझ में आया कि किस टाइप के सेशन एक दो और जो मैं प्लान किया हूँ. I'll probably modify some of those sessions. We'll see that I take into account all of your comments, some specific concerns that you guys have. Right? Saturday को तो एक और session है ही. But other than that, अगले हफ्ते में जो YouTube पे भी हमारे sessions planned है, I will definitely, now that I've taken a look at all of your comments, I'll try to get it done, right? आपकी टीम से कांटेक्ट कैसे करें? It's not complicated. You can reach out to me on Facebook. You can reach out to the Clat Possible website पे सबके नंबर्स दिए हुए हैं. एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग भी इन्वॉल्व है, right? Feel free to give them a call. They'll put you in touch with me or other faculty members depending on कौन सा आपका specific concern हो, and so on. In the meanwhile, guys, have a very lovely evening ahead of you. Please have a lovely evening. वीकेंड भी आ ही रहा है, आप लोग सब अपना वीकेंड एंजॉय करिए. सैटरडे शाम को आप लोगों से मुझे फिर से मुलाकात करनी है. सैटरडे शाम को तो फिर मुलाकात होती है. In the meanwhile, have a lovely day. Thank you very much. Good night, everyone. Bye bye.